Hello everybody, welcome to Oxford Media Services English with the WLE, the first year intermediate section C, Alpha Series reference book. Dear students, as we talked about present indefinite in lecture number 1, present continuous in lecture number 2, and present perfect in lecture number 3, past indefinite in lecture number 4, and today we have past continuous in passive, lecture number 5. So dear students, going to the topic that is present past continuous in passive. So after past indefinite, as you got and you understood that subject plus second form is the tense structure. Today in this we have in past indefinite we have the tense structure, and the tense structure, first of all we should note, and when we are clear about the tense structure, then we will be also clear about the rest of the process of changing the sentences. So subject स्ट्रक्चर टेंस का जो है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब एंड देन प्लस वर्ब plus ing, and after ing we have the object of the sentence. That's the structure of the past continuous tense. So suppose that there is an example. For example, there is written she subject she, and here she singular है तो was ले आएंगे, she was, और इधर हम verb लाएंगे. verb यहाँ जो है net दिया गया है KNIT, तो इसके साथ ing लगाएंगे तो TING. She was knitting the sweater, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी वो स्वेटर को बुन रही थी, स्वेटर को बुनी रही थी. शी वॉज नीटिंग द स्वेटर. बुनना, निट का मतलब यह है. अब इसकी पैसिव स्ट्रक्चर जो है, पैसिव स्ट्रक्चर यानी इसी टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर. डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट continuous tense we have already done. In continuous tense we had the structure is RM and being in third form, the same structure, but here only the auxiliaries are different. So present continuous and past continuous, there we used in present continuous passive is or am. Here in past continuous tense we use was and were, and the same being in the same third form will be used as dummy subject. The object of the sentence period हम लाते हैं, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम was और were का इस्तेमाल करते हैं. बस वही कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज़ारेम को इस्तेमाल करते थे, और फिर उधर भी बीइंग लगाते थे, इधर भी बीइंग लगाएंगे, और फिर पास्ट पार्टिसिपल वही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा. तो कैसे? द स्वेटर, इसको इधर लाएंगे, द स्वेटर वॉज, इधर वॉज लगाएंगे, द स्वेटर वॉज, एंड हियर बीइंग, द स्वेटर वॉज बीइंग नीडेड. इसका थर्ड फॉर्म जो है NITED, needed by her. The sweater was knitted by her. So इसी तरह हमने सेंटेंस को चेंज कर पाया, और ये स्ट्रक्चर जो हमने लिखा was were, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है. Only is RM changed to was were. So let's go into the exercises over here. And the exercise here, first वही तरीक़ेकार पे जाएंगे कि हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को करेंगे. सेंटेंस नंबर 1, she was, ये सेंटेंस नंबर 1 है. she was watching television. she was watching television. सेंटेंस नंबर 2 जो है ये भी पॉजिटिव है. students were solving the questions.
Students were solving the questions. So इसको चेंज करते जाएंगे. सब्जेक्ट चूँकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. और इधर ये स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, वर्ब एंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो इसको फिर वही टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न चूँकि सिंगुलर है, वाज लगाएंगे, वाज के बाद क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे. यानी पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म लगाते थे, हियर वाज के बाद बीइंग लगाएंगे. वॉच्ड, टी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हर. एंड हियर स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस ये प्लूरल है. द क्वेश्चंस वर, इधर हमने वर को इस्तेमाल किया क्योंकि क्वेश्चंस प्लूरल है. इसी के मुताबिक हम इधर वाज वर लगाएंगे. द क्वेश्चंस वर बीइंग सॉल्व्ड. द क्वेश्चन वर बीइंग सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स. The questions were being solved by students. So that is the two positive sentences. The next two are negative sentences. In the negative sentences, sentence number 3 जो है, sentence number 3, he was not listening, he was not listening radio. यानी वो रेडियो को नहीं सुन रहे थे. He was not listening radio. वो रेडियो को नहीं सुन रहे थे, वो रेडियो नहीं सुन रहा था. He was not listening radio. वो रेडियो नहीं सुन रहा था. She was not, नंबर 4 जो है, she was not यानी नेगेटिव है. She was not pressing the clothes. वो इस्त्री नहीं कर रहे थे कपड़ों को. She was not pressing the clothes. अब इन सेंटेंसेस को भी इसी ही तरीके से जिस तरह हमने पहले किया चेंज करते जाएंगे. तो पहले ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट ये ही सब्जेक्ट है, लिसनिंग वर्ब है, रेडियो जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है. सब्जेक्ट और प्रेस वर्ब एंड क्लॉथ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो कमिंग टू द सेंटेंस, द रेडियो चूँकि ऑब्जेक्ट है, रेडियो को इधर लाएंगे. रेडियो was not being radio was not being watched, listened. Radio was not being listened. Lesson का थर्ड फॉर्म lesson है, listened by her. Radio was not being listened by her. The cloth is object है, the cloth is को इधर रखेंगे. The cloth is क्योंकि ये प्लूरल है, the cloth is were को लगाएंगे. were not, not फिर वही not है, not लगाएंगे. were not being washed. The clothes were not being washed by her. तो इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस हमने चेंज किए और साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी आगे चल के इसी तरह करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो सारे सेंटेंसेस का एक ही जैसा है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मास्टर करना है. सो सेंटेंस नंबर 5 जो है ये इंट्रोगेटिव है. was the dog chasing the cat. For example, was the dog chasing, was the dog chasing the cat, was the dog chasing the cat. और sentence number 6 जो है वो भी इसी तरह इंट्रोगेटिव का है. were they singing songs, were they singing, were they singing the songs, were they singing the songs. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. इंट्रोगेटिव में भी वही तरीक़ेकार को अपनाएंगे. इधर जो द डॉग है ये सब्जेक्ट लेंगे, ये वर्ब है और कैट ऑब्जेक्ट है, और इधर दे सब्जेक्ट और ये वर्ब है और सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है. तो फिर क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को वही तरीक़ेकार को ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे. द कैट, सो क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इधर इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि वॉज है, वॉज को अपनी ही जगह लगाएंगे. वॉज द कैट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने वाज ही लगाया. वॉज द कैट बीइंग चेस्ड बाय डॉग. वॉज द कैट बीइंग चेस्ड बाय डॉग. एंड वर दे सिंगिंग द सॉन्ग्स. सो द सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है तो इधर सॉन्ग्स प्लूरल है तो वर लगाएंगे. वर द सॉन्ग्स बीइंग
और सिंग का थर्ड फॉर्म जो है संग। वर द सॉन्ग्स बीइंग sang बाय दम, वर द सॉन्ग्स बीइंग sang बाय दम। तो इंट्रोगेटिव में हमने इधर इसको बात को थोड़ा सा नोट किया करें कि अगर ये सिंगुलर हो तो इधर ये सिंगुलर वाज का एक्सिलरी लगेगा, अगर ये प्लूरल हो तो फिर हम इधर वर का एक्सिलरी लगाएंगे, ठीक। द नेक्स्ट टू सेंटेंसेस आर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की इंट्रोगेटिव हैं। 7 और 8 जो है ये इंट्रोगेटिव है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की। तो सेंटेंस है नंबर 7, वेयर वॉज ही बिल्डिंग, वेयर वॉज ही बिल्डिंग द न्यू हाउस, द न्यू हाउस, यानी वो कहाँ पर नई घर की तामीर, नई घर की तामीर कर रहा था। नंबर 8 जो है वो भी इसी तरह इंट्रोगेटिव है। When were they painting the room? When were they painting the room? When were they painting the room? ये इंट्रोगेटिव। सो फर्स्ट क्या करते हैं आप कि वो पहले वाले सेंटेंस को इधर हम ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, बिल्डिंग वर्ब है और हाउस जो है ये ऑब्जेक्ट है। इधर दे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, पेंट वर्ब है, द रूम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। आप इसको कैसे करते हैं, वही वेयर, विन, व्हाट, हु, विच, वाई को अपनी ही जगह छोड़ देते हैं। यानी वेयर पहले वाले सेंटेंस को वेयर वॉज वेयर वॉज ही बिल्डिंग द न्यू हाउस, द न्यू हाउस, वेयर द न्यू हाउस सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। वेयर वॉज द न्यू हाउस, द न्यू हाउस being where was the new house being built, where was the new house being built by him, where was the new house being built by him। और ये सेंटेंस नंबर 8 जो है when were they painting the room, so when रूम सिंगुलर है तो was लगाएंगे। when was the room being painted by them, painted by them, when was the room being painted by them। तो ये इंट्रोगेटिव में भी हमने इसको इसी तरह चेंज किया। याद रखा करें कि वंस अगेन आई वांट टू रिकॉल दैट द ऑक्सिलरीज शुड बी आफ्टर व्हेन वेयर वाज, डोंट राइट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल वेयर द न्यू हाउस वाज बीइंग बिल्ट, सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस दैट वेयर द न्यू house was it's not, the auxiliary should be after this words, not over here. So be careful with that, and the rest of the sentences are not so difficult. Now going to the next exercise, and the next exercise is what? Converting the sentences from passive into active in continuous tense. So अब क्या करना है कि जो सेंटेंसेस पैसिव में दे गए हैं उसको एक्टिव करते जाएंगे, ठीक। वॉइस वर्सा है। चेंज द सेंटेंसेस इनटू एक्टिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, चेंज द सेंटेंसेस इनटू एक्टिव, चेंज इनटू एक्टिव, यानी ये पैसिव में दी गई हैं, इसको एक्टिव में करना है। सेंटेंस नंबर 1 जो है, पीपल वर, चूँकि ये हमने पीपल वर बीइंग warmly received there, warmly received there, तो ये सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल इसके साथ हम बाय नहीं लगाते हैं, ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये सेंटेंसेस चूँकि ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होते हैं पैसे में, कि फिर आपको ट्रांसलेशन में कोई मसला ना हो, आप अखबार में देखें, न्यूज़ में देखें, किसी और बुक में देखें, कि आपको पता चले कि अगर इसके साथ बाय भी ना हो तो सेंटेंस का मतलब क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल पीपल वर बीइंग वार्मली रिसीव्ड देयर, लोगों का वहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा था, लोगों का खैर मुक़द्दम किया जा रहा था, लोगों को वेलकम किया जा रहा था। पीपल वर बीइंग यानी किया जा रहा था, कोई और कर रहा था कि उनको वेलकम किया कर रहा था। फिर हमने बाय लगाया है कि बाय द होस्ट, मेज़बान के जानिब से, बाय द होस्ट, ताकि आपके लिए फिर सब्जेक्ट में थोड़ा सा आसानी हो कि आप इसको फाइंड किया करें। सेंटेंस नंबर 2 जो है वो भी इसी तरह है। शी वॉज बीइंग पनिश्ड,
अगर इसमें शी वॉज बींग पनिश्ड, अगर इसमें से हम थोड़ा सा ये बाई हटा दें तो इसका फिर क्या मतलब होगा, शी वॉज बींग पनिश्ड, उनको सज़ा दी जा रही थी, और इधर फिर हमने बाई लिखा बाई हिम, ही वॉज बींग पनिश्ड बाई हिम, पनिश्ड बाई हिम, सॉरी। सो अब इसको क्या करते हैं, वही तरीक़ेकार अपनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के। पीपल वर बीइंग वार्मली रिसीव्ड देयर बाय द होस्ट, चूँकि होस्ट दिया गया है, द होस्ट वॉज सिंगुलर है, द होस्ट वॉज वार्मली, वार्मली एडवर्ब है, ये अपनी ही जगह लगेगा, यानी गर्मजोशी से। द होस्ट वॉज वार्मली रिसीविंग, चूँकि ये अब वर्ब है इधर आईएनजी लगाएंगे, द होस्ट वॉज वार्मली रिसीविंग द पीपल, द पीपल, यानी होस्ट जो है लोगों का पुरजोश खैर मकदम कर रहा था। शी वॉज बींग पनिश्ड बाई हिम, सो हिम चूँकि ऑब्जेक्ट है, ही वॉज, आप इधर लगे, ही वॉज पनिशिंग, ही वॉज पनिशिंग हर। सो सेंटेंस को एक्टिव करते चले गए। सो अब ये नेगेटिव की भी इसी तरह सेंटेंसेस दो दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को भी हम इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 और नंबर 4 जो है, सेंटेंस नंबर 3 और नंबर 4 जो है, सॉरी दैट वी हैव नॉट चेंज द टाइटल ओवर हियर, ये पास्ट कंटिन्यूअस के पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव, सो ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव हमने लिखे हैं, ठीक ठीक है, ओके सॉरी। एंड गोइंग टू द नेगेटिव 2 सेंटेंसेस, नेगेटिव में सेंटेंस नंबर 3 जो है, सेंटेंस नंबर 3, बुक्स वर नॉट, बुक्स वर नॉट बीइंग distributed, books were not being distributed। अगर इस इधर हम थोड़ा सा बाई को हटा दें, किताबें तकसीम नहीं किए जा रहे थे, किताबें तकसीम नहीं किए जा रहे थे, बाई चुन के इधर हम ऑब्जेक्ट पे ले देते हैं बाय द। सेंटेंस नंबर 4 जो है वो भी नेगेटिव सेंटेंसेस है। स्टूडेंट्स were not being taught by the teacher। अब चूंकि ये दोनों सेंटेंसेस पैसिव में हैं, इसको हम एक्टिव में कैसे करते हैं, बुक्स वर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम, सो देम दे ऑब्जेक्ट है, दे वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग, दे वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स, दे वर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स, ठीक। और स्टूडेंट्स वर नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर, टीचर चूँकि इधर टीचर जो है ये ऑब्जेक्ट है, सो द टीचर वी विल टेक एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द टीचर इज सिंगुलर, so what should be done over here, the teacher is singular, so we should put was, the teacher was not taught is the third form of teach, so we put over here teach, the teacher was not teaching the students, students object है तो फिर हम इधर students लगाएंगे, the teacher was not teaching the students, so these two were negative, and the same structure is followed over here. The sentence number 5 and 6, they are then interrogative. Sentence number 5, what is sentence number 5? Sentence number 5 is interrogative sentence, and were people being given, were people, क्योंकि ये people हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते तो हमने were लगाया, so were people being given food, अब इसको हम बाई नहीं लगाते, चलो क्या ट्रांसलेशन होगा, were people being given food, क्या लोगों को खुराक दिया जा रहा था, और फिर हमने इधर बाई लगा के government। So the next sentence is sentence number 6 जो है,
ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. Was the movie film, was the movie being watched by students? Was the movie being watched by students? So, were people being given food by government? Was government giving food? Was the government giving food to the people? Interrogative, sign of interrogation रखेंगे. Was the movie being watched by students? So students है ना, तो students plural है. Were students watching movie? Were students watching movie? So we put were over here because the students are plural. Sentence number 7 and number 8. 7 number sentence. Sentence number 7. Where was she being posted? Where was she being posted as lecturer? So sentence number 8 is also the same in interrogative, and who was being punished? किसको सज़ा दी जा रही थी? अगर इधर बाई ना हो और फिर अगर हम बाई लगाए तो बाई पुलिस, क्योंकि फिर हमें सब्जेक्ट में आसानी होगा बाई पुलिस. So now let's go into the sentences. Where was she being posted as a lecturer? So we haven't used by over there, so we put by there so that it would be a little bit easier for you. Where was she being posted as a lecturer by government? चलो इधर government लगाएंगे कि फिर आपको थोड़ा सा clear हो. So where was she being posted as a lecturer by the government? Where was the government posting her as a lecturer? So that is. And who was being punished by the police? Who? So now police plural. Who were the police? Who were the police punishing? Who were the police punishing? Police किसको सजा दे रहे थे? And who was being punished by police? So who were? So sorry, we didn't put the police. Who were the police? Who were the police punishing? Who were the police punishing? So, dear students, that were lecture about past continuous passive. Hope you will have gotten. Stay with us. Oxford Media Services Relative Service Alpha Series reference book should be with you. And the lecture is not only important for the students of intermediate, but it is also important for all students taking MTCAT, taking competitive examination test, etc. So that's all from over here. Thank you. Tata. Bye bye. See you next.